So last class we have seen some couple of things regarding JVM architecture. What is JVM? What is JDK that we have talked about? So JDK stands for Java Development Kit, or it is a software. It is a software. It is software, and it is provided by Java, that is Sun Microsystem and Oracle. And you can download this from oracle.com and you can install this. It is kind of a suite of software which contains lot of other sub softwares, जैसे Java compiler, Java debugger, Java profiler, JRE and JVM. So this software is useful for the developers, Java developer. The Java developer can write the program, compile that, run that, and debug, and so many other things, right? So for that purpose, we use JDK. So JDK consists of Java compiler, JRE, JVM, and lot many other software. So Java compiler will compile your Java file and will generate the bytecode. And later on, once we have the bytecode, for the execution purpose, we use the JRE. JRE stands for Java Runtime Engine or environment. So JDK consists of lot of other things, Java compiler, and there are a lot many other things, and plus JRE. And JRE consists of JVM. JRE consists of JVM. Then we talked about how actually Java works, that also we have talked about. Now Java developer is going to write, compile and run the programs. So for this purpose, developer is responsible, and he is going to use, which software it is going to use? It is going to use JDK. So JDK consists of all the necessary things which are there for a developer. The developer can compile, run, and sort lot many other things. But the customer, at the other hand, he is going to just execute or run the program. उसका काम क्या होगा? बस programs run करना. And for that purpose, he is going to use JRE. So once again, JDK consists of JRE, JRE consists of JVM. So this is what we have talked about last class. So how actually Java works? So Java works. So we write the Java program and save that file with the help of .java extension, example app.java. Then that file is given to the Java compiler. Then Java compiler will check, is there any mistakes or any error in this particular file? If it is so, it is going to display this. If there are no errors, it is going to generate the output, that is .class file, which will contain. So all of these are same names. All of these are same names: bytecode, magic code, intermediate code. So that will be stored inside the .class file. So this is not a binary code. Remember, this is not zeros and ones. Now on this machine, we need to have the JDK to be installed. And inside that, you will find the Java compiler software that we are using for the compilation process. Now we take the software and we try to run that on different machines. So this is on the developer's machine. Now these are different customer's machine. So you will take this bytecode and you will try to run this bytecode on different machine, Windows, Linux, and Mac. But in order to run this bytecode, you need to have JRE. So JRE will read that particular .class and it will generate it into zeros and ones, which are understood by Windows. This JRE will accept the will read the .class, that is class, and from that class file it will generate zeros and ones, which are only understood by Linux. Similar for the Mac also. In this case, if you see, we are writing the Java program only once, but we are able to run that on any other machine. We are able to run that on any other machine. So that is called as Java platform independency. Then we talked about what JVM is. JVM stands for Java Virtual Machine. It is part of JRE, and JRE is part of JDK. So once again, we have illustrated this process further. You write the .java file, we give that file to the compiler. Compiler will generate a .class file. Now that .class file is given to, let's say, on some other machine, or maybe it is given to the JRE. Now the second thing is, now this particular .class,
which will contain the class. Now that class will be loaded in the memory with the help of class loader. So this is the first part. This is the first part of compilation. Now we are into second stage. What is that? Execution. Now in the execution, before we start the execution, class must be loaded in the memory. तो अभी क्या करते हो आप, जो भी आपके पास डॉट क्लास फाइल मिलता है उस फाइल को आप, उस फाइल के अंदर आपको डॉट क्लास के अंदर आपको एक क्लास मिलेगा, काइंड ऑफ सम कोड बोल सकते हो. नाउ दैट क्लास विल बी लोडेड इन द मेमोरी विद द हेल्प ऑफ class loader. It will be loaded with the help of class loader. Now this program will load the program content or that particular class in the memory. Then that particular, once that class is loaded in the memory, then that class will be verified with the help of bytecode verifier. So this is the next program we have, bytecode verifier program. What it does, it verifies whether the bytecode is correct or not once again at runtime. Now once that is verified, then it will have different program components. It will have different components that the data needs to be stored in different memory locations. तो इसलिए क्या होता है, जो आपका execution memory है उसे divide किया होता है different memory compartments से. Now in this particular memory there are different 6 components high level. One is heap, then stack, class or method memory area, native method memory area, native method stack memory area, PC register memory area. So these are the different names given to the memory compartments. These are what? These are the different compartments, and for each compartment there is a given name. So in this particular first part, keep a memory area, what things will be stored? Inside that there will be instance variables or objects will be stored. Objects will be stored in short, and objects contain the instance variable. We will be talking about what object and class today only. Stack. Stack is also a memory area where your local variables will be stored, and it will maintain method execution stack. There will be hundreds of methods, and in that hundreds of method which is currently executing method, which methods are completed, that stack will be maintained inside this particular memory area. Third, we have class or method memory area. In this your static variables will be stored. So variable का काम क्या होता है? Data store करना. So we have different types of variables. We'll be looking into local variable, static variable, instance variable. These all variables we are going to look into. And one of that static variable is stored in which memory area? Class or method memory area. So we have 3 types of variables: local, static and instance. Instance variables आपके heap में रहेंगे. Local variables will be stored inside the stack memory area, and class or method memory area you will find the static variables. And then we have native method memory area, then you have native method stack. मतलब native मतलब non java code. क्या हो सकता है? Non java code. So that code execution if you want to do, for that purpose there is this particular method memory area. Native method मतलब जो नॉन जावा कोड हो उनको एग्जीक्यूशन के लिए कुछ ना कुछ वहां पर भी कुछ वेरिएबल्स रहेंगे, उनको एग्जीक्यूशन के लिए आपको ये मेमोरी यूज होता है. सिमिलरली जैसे जावा की मेथड्स होती है, फंक्शंस होते हैं, वैसे नॉन जावा भी, नॉन जावा कोड में भी आपको फंक्शंस या प्रोसीजर्स या मेथड्स रहेंगे. उनका एग्जीक्यूशन का ट्रैक रखने के लिए विच इज द करंटली एग्जीक्यूटिंग मेथड, वो ट्रैकिंग के लिए यूज होता है ये पर्टिकुलर नेटिव मेथड स्टैक मेमोरी. व्हाट वी यूज? नेटिव मेथड स्टैक मेमोरी area, this particular part. Then PC, this particular memory area stores what is the next instruction to be executed. उसका डिटेल्स कहाँ पर मिलेगा हमको, और जो नॉन जावा कोड है नेटिव कोड उसे कहाँ पर स्टोर किया जाता है? नेटिव लाइब्रेरी. जैसे आपका डॉट जावा फाइल्स होता है वैसे नेटिव लाइब्रेरी में आपका नॉन जावा कोड होगा, and then that code will be loaded in the memory with the help of native interface in the memory. And once everything is loaded in the memory, non-Java code components, Java code components, then there is a part of execution engine. What it is going to do? It is going to finally convert the code into zeros and ones, and that zeros and ones will be executed on the right. Now there is one more thing you have to remember. So let's say this is your operating system. This is your operating system. Now this is your operating system. Inside that you will find there is one Java virtual machine. So your Java code runs inside this particular part.
this is running inside the OS only, but this is a secured component. This is a virtual machine. This is a secured area. That's why Java is secured. And in non-Java, in this मशीन इटसेल्फ, मतलब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम के एरिया में वहां पर C++ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं एंड जावा प्रोग्राम्स रन इन दिस पर्टिकुलर सिक्योर्ड मेमोरी, दैट इज पार्ट ऑफ आल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम, बट यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है आपका. So this is your OS, and in the OS memory your C++ programs will be executed, and inside the OS will have a Java virtual machine. Inside that your Java programs will execute. That's why it is more secure. Okay? So this is what we have seen in the last class. So today we are going to see these two things, class and object. बहुत theoretical discussion होने वाला है, but it will be useful. Okay. सबको hello world program याद है सबको? What is the hello world program? Can you tell me? अभी तक तो मुझे लगता है याद होना चाहिए सबको. What is the hello world program we have done? Let me write that. Write that, and we will talk about this also. And you write something like this. So can someone help me understand this code? Can you help me understand this particular code? I don't need this package right now. Fine. Can someone help me understand this code? ये हमने देखा है ये प्रोग्राम. So what do you think? Why like this is a program, right? What is program? Program is nothing but a set of instructions to complete a task. Program is nothing but set of instructions to complete a task. अभी आप कौन सा task complete कर रहे हो? What task you are trying to complete? Printing something on the screen. That is the task you are completing. To print something on the screen, you have written in some set of lines. You have written some set of lines. ठीक. अब यहाँ पर आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि सारे वर्ड्स आपको पता हो, बट स्टिल कैन यू सी द वर्ड क्लास? इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप बोल सकते हो. क्लास मतलब ग्रुप. क्लास इज नथिंग बट अ group. This word is kind of coming from the word called as classification. What is this word coming from? Classification. Classification का मतलब होता है grouping. Grouping या categorization बोल सकते हो. Grouping या categorization. Classification, grouping और categorization. Now you tell me, आपका हर एक बैच का एक अलग अलग ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप. सो व्हाई वी आर क्रिएटिंग द ग्रुप? फॉर इजी कम्युनिकेशन बोल सकते हो. So you are part of that particular group. So whether that group is physical entity somewhere, can you find what is that group? Group of students. Group of students बोला मैंने for this particular Java batch. So I have created a class or a kind of a group. Now whether that group is kind of physical, can we? It is a logical entity. It is a logical entity. It is a logical entity, and whereas members of that particular group are kind of something we can see them.
We can see them. So they are going to allocate some memory. They are going to allocate some memory. Yes. So class word is coming from the word classification. From where it is coming? This word is coming from classification. Where it is coming from? This is coming from classification or grouping. Now what group we are creating? अभी यहाँ पर बोला है कि class मतलब group. Now you have created a group. You have created a group. It is saying. So it is saying that you have created a group. Now, once again, from the day one, I'm talking about what is a program. Program is nothing but a set of instructions to complete a task. Now, to complete a task, you might have one line of statements or multiple lines of statements. So, your task completion will need some set of steps. कुछ steps चाहिए होगी उसको, उसका कुछ beginning होगा, उसका कुछ end होगा. So, we'll enclose these steps inside the curly braces. So since these steps belong to which task? To identify easily, what we do? We give a name. We give a name. Yes, Rahul. And to perform that task, you might accept some input also. Let's say addition of two numbers. We need to accept two numbers. Addition of two numbers के लिए हमको input accept करने पड़े. After completing the task, you might return some output also. So you will say output type also. This is where you will specify output. This is where you will specify the input. Now you might have multiple tasks. This is one task. This is one task. Now like that, you can have hundreds or thousands of tasks. You will have hundreds of thousands of tasks. You will have hundreds of thousands of tasks. तो आप मुझे बताओ, सारे आप टास्क एक ही साथ लिखोगे, एक ही फाइल में लिखोगे? No. So we'll not put all the tasks together. We'll not put all the tasks together. So what we do? We create logically related tasks together. We put logically related tasks. What we do? Let's say आप कोई बड़ा एक एप्लीकेशन होगा, मतलब इंटरनेट बैंकिंग है, तो उसका लॉगिन रिलेटेड एक फंक्शनलिटी अलग, लॉग आउट के लिए अलग, चेक बैलेंस के लिए अलग, बहुत सारे ऐसे टास्क होंगे, छोटे छोटे टास्क होंगे. So what we will do, we will try to group the logically related tasks together. What we do? So like this, we'll have multiple tasks. Task 1, task 2, task 3, task 4. Now I want to create a group of tasks. So I want to create a group of tasks. So this is task 1, task 2, task 3. We have multiple tasks and so on. So I am putting all these tasks together inside this curly braces. So what this curly braces stands for? This is kind of a group name. I can say login functionality related. So I have login functionality related task. Now since I want to say this is a group of tasks or a group of related tasks, what I will do, I will say this is a group. I will say this is a group. And how do I say this is a group? I say class. I write the keyword called as class. So when I write this class, इसका मतलब होता है कि this is kind of a group. What this is nothing but a group. So when I write the word class, इसका मतलब होता है कि this is a group of related task. अभी इसमें related task हो सकता है, data भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें. So this is kind of a related or logical grouping of things. This is a logical grouping of things. This is a logical group of things or tasks. This is nothing but a classification. So what you did a classification or a grouping or a categorization of related data and tasks together. आपके पास task हो सकता है या methods बोल सकते हो. task को आप क्या बोल सकते हो? methods, procedure, function, routine, behavior, implementation. There are hundreds of names for that. Same thing. Hundreds of names for that. ठीक. Now, this is one of the thing. Now we will take some use cases where we will see the class and object concept. अभी हम class and object concept देखने वाले. अभी मैंने आपको बस एक class क्या होता है थोड़ा सा एक intro बताया कि program में क्या होता है. So in this thing, what we did a classification of task. Classification of
task. Now we are going to do some classification in real world. अभी ये class and object concept was not there before, मतलब ऐसे नहीं कि class and object पहले नहीं था. So this class and object concept is way before your programming language. So this class and object concept is already there before programming language. Before programming language. ये पहले से ही है. ऐसे नहीं कि प्रोग्रामिंग आया और आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट आया. नो, class object was already there. Class object concept is already there. This concept is implemented by programming languages. Now there are different programming languages. We have Java, C Sharp, PHP, JavaScript. They have multiple programming languages, and lot of programming languages have implemented this concept called as class and object. They have implemented this concept called as class and object. Now we'll think in real world की class क्या होता है, object क्या होता है. Now, if you want to construct a house, I am going to give you some couple of analogies. This is the first analogy I am trying to give you. So if you want to construct a house, what is the first thing you will do? You will write the plan. You will write the plan. So this is where you are going to create a floor plan or a blueprint. बहुत सारे नाम हो सकते हैं. You can have multiple names. Then using this floor plan, what you are going to do? You are going to develop building where you will have, you are actually constructing a house. Actually, you are constructing a house. How you are constructing the house. So this is nothing but you have constructed the house. Now this was earlier empty space. This was earlier empty space. This particular thing, the house on which the plot is, on this particular plot, the house is created. आपका जो भी building है वहां पर construction हुआ. तो construction कैसे हुआ है? So the construction has happened. Construction has happened with the help of this particular plan. ये plan का use किया होगा आपने. तो construction करने क्रिएट करने से पहले, आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले, यू मस्ट हैव द प्लान. उस प्लान का यूज करके आप क्या करोगे? यू विल कंस्ट्रक्ट द हाउस. राइट. नाउ सिंपल क्वेश्चन, यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्लान, हाउ मेनी houses you can build? Any number of, can create any number of things, any number of houses. Now every time you create a house, what you are doing, you are trying to occupy the space. You are going to occupy the space. So to create a house, what is compulsory? Space तो है, लेकिन plan चाहिए. So we have plan, and then using that plan we will allocate the space. We will allocate the space. So this is your left hand side. You can think of this is your class. This is your class, and right hand side you can think of this is object. So what are the questions you want to ask? What is a class? Class is nothing but a structure, layout, template to create object. What is object? Object is an instance of a class. बहुत सारे लोग बोलते हो instance of a class, but object is created using class. Object is created using class. So you tell me whether object is a logical entity or physical entity. It is a physical entity. It is going to occupy the space. And class is a logical. It is a logic. Logical का मतलब क्या होता है? It is not present on, it is on paper. It is on piece of paper. Actual building है क्या वो? It is not an actual building. It is just a piece of paper or a structure. जैसे आप WhatsApp group create करते हो, whether the WhatsApp group is present somewhere, you are part of that particular structure. You are part of that particular structure. So floor plan, blueprint, or a template or a structure, it is nothing but a class. So ये plan किस, मतलब what are these instructions? These are set of guidelines बोल सकते हो, set of rules बोल सकते हो, set of guidelines ही बोल सकते हो, right? Now these set of guidelines are written. These are set of guidelines are written to create a house. So class is nothing but a specification or a structure or set of guidelines to create an object. So what is needed first, class or object? We need class first. And why do we need class? We need class to create object. We need class to create object. So how many objects you can create using given class? You can create any number of objects. Now
whenever you are creating class, whether the memory space is allocated, when you create object, then the memory space is allocated. When the memory space is allocated, when you create the object, who needs more memory, class or object? Obviously object. So class is kind of a set of instructions. Set of instruction. This is very small amount of data it will need. It will need some space, but as compared to object, who will need more as compared to object, class will need very little amount of memory space, right? Now if I create a class, from that class you can create any number of objects. Every time you create a object, memory space will be allocated. So this thing in mind. So what is object? Why do we need object? Or what is an object? How do we create an object? These are the questions. तो क्लास के रिलेटेड पूछते हैं. व्हाट इज क्लास? क्लास इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ गाइडलाइंस, सेट ऑफ instructions to create an object. What is the use of class? Class is nothing but a set of guidelines and it is used to create an object. So what and why question is clear. What is an object and why do we need object? How do we create an object? तो यहाँ पर हाउ क्वेश्चन हम देखने वाले लास्ट में, सबसे लास्ट में हम हाउ क्वेश्चन देखेंगे. सबसे पहले व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट बुकिश डेफिनेशन है इसका. ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. बुक्स या बहुत जगह पे लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, राइट? इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो. तो ऑब्जेक्ट मतलब जो बिल्डिंग आपने बनाया होगा, उसके अंदर आपने जो भी स्ट्रक्चर खड़ा किया होगा, वो कैसे क्रिएट किया आपने? हाउ डिड यू क्रिएट दैट स्ट्रक्चर? जो प्लान था उसको देख के आपने उसमें बोला होगा दिस इज द पार्किंग, दिस इज द हॉल. तो बेस्ड ऑन दैट, जिसके अंदर जो स्ट्रक्चर दिया था, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आपने क्या कर दिया, वहां पर मेमोरी स्पेस एलोकेट कर दिया. क्या कर दिया आपने? वहां पर स्पेस एलोकेट कर दिया आपने. मतलब आपने बोला कि दिस शुड बी द पार्किंग. तो पार्किंग, आप जब पार्किंग क्रिएट करोगे तो पार्किंग मतलब पार्किंग के लिए स्पेस एलोकेट हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी हॉल, तो हॉल के लिए वाला स्पेस एलोकेट हो जाएगा. तो object is an memory space allocated for the class type data. मतलब the data, मतलब जो भी वहां पर स्पेसिफिकेशन था, this should be parking, this should be hall, तो उन सारी चीजों के लिए memory space allocate करना. So what is an object? Object is an memory space allocated. But किसके लिए? The things which are specified in the plan. For the things which are specified in the plan, उनके लिए memory space allocate करना. That is nothing but object. So why do we need object? Why do we need object? To perform certain tasks. Okay, we need object to perform certain tasks. Yes, perfect. That is a good answer. We need objects to perform certain task. We'll take this one more thing. अभी ये पहला analogy था. I will take one more. Let's take another analogy. Now this time we'll take the simple one. Now let's say you're planning to start a bank. Like there is some company who wants to start a bank. So what they will try first? They want to create a system. बैंक में क्या होता है? So bank has bank account. So where someone will add some money, someone will withdraw. So the money is in someone's account. Money is in someone's account. So how a bank account will look like? मतलब कोई भी कस्टमर का बैंक अकाउंट कैसे दिखेगा? What all operations he can perform? मतलब लेट्स से कोई आपको बैंक अकाउंट, किसी का कोई भी कस्टमर आएगा तो क्या ओपन करेगा? बैंक अकाउंट ओपन करेगा, राइट? नाउ देयर आर टू थिंग्स, वेरी सिंपल. So what customers data we need and what all operations we can perform. ये पहले से डिसाइड होगा ना, या बाद में होगा? कस्टमर आएगा तो उसको बोलेंगे आप ये विड्रॉ नहीं कर सकते, डिपॉजिट नहीं कर सकते. व्हाट ऑल थिंग्स ही कैन डू दैट आर स्पेसिफाइड वेल इन एडवांस. सारे कस्टमर क्या करेंगे? तो
किसी का भी बैंक अकाउंट होगा तो व्हाट ऑल थिंग्स दे विल बी एबल टू परफॉर्म, ये पहले से डिसाइड होगा, स्ट्रक्चर पहले से रेडी होगा। तो व्हाट ऑल थिंग्स देयर विल बी, थिंग्स क्या होगा, बैंक अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट नंबर हो सकता है, उसके बाद उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम रहेगा, फिर उसका बैलेंस रहेगा, आईएफएससी कोड रहेगा, और बहुत सारी डिटेल्स रहेगी, ऐसी बहुत सारी डिटेल्स रहेगी हर एक कस्टमर के लिए। एंड व्हाट ऑल ऑपरेशंस इट कैन परफॉर्म, विड्रॉ करना, डिपॉजिट करना, ट्रांसफर करना, ये सारे क्या हो गए। तो दिस इज योर डेटा, दिस इज योर डेटा, एंड दिस इज योर operations, operations or task, operations or task. So you tell me this information, ये क्या है, बस structure. So what they have created, they have created just a structure. This is on piece of paper, ठीक है, structure अभी बस क्या रहा, structure, इस structure के according कस्टमर का डेटा फिल किया जाएगा। तो दीज आर काइंड ऑफ कॉलम्स बोल सकते हो आप, दीज आर काइंड ऑफ दिस डेटा इज नथिंग बट कॉलम्स या फील्ड्स बोल सकते हो। एग्जाम्पल, अब मुझे 10 कस्टमर का डेटा रखना है, आई वांट टू स्टोर 10 कस्टमर्स डेटा। तो फर्स्ट आई विल हैव अ हेडिंग, आई विल हैव अ heading. What heading I will have? What heading I will have? You will have ID, account number, name it will have, balance it will have, and some other fields. आपने क्या बनाया, आपने स्ट्रक्चर बनाया। So these are nothing but columns, and I'm going to add the rows. These are nothing but columns and rows. Now I have some records. There are 5-6 customers, and account number is, let's say, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Names are, let's say, A, B, C, E, F. Balance, let's say, 0, 1, 2, 0, 200. Right? अभी जो आपने ये क्रिएट किया ना, दिस आर नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रक्चर, दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रक्चर। And what are these? This is the data, this is the data. So this is a this is what the memory space, this is what the memory space. So this data is for whom? This is called as object. What is this? Is, you can think of this is object, object 1, object 2, object 3, object 4, object 5, object 6. And what is this? This is a structure or a class. So this is an object which is created or a memory space allocated using this class structure. तो पहले क्या चाहिए आपको, मतलब किसी का भी डेटा स्टोर करना है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका क्या क्या डेटा स्टोर करना है, व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू एक्सेप्ट। तो आप क्या करोगे, पहले स्ट्रक्चर्स बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाओगे। तो दिस इज व्हाट we have to do before we even start accepting the user details or customer details. We need to have the structure कि customer का क्या क्या डेटा हम accept करने वाले हैं। Total things will be there in a customer's account. That structure creation we do. What we do? We do the structure creation. The structure creation is done well in advance. पहले आप क्या बनाओगे, क्लास बनाओगे, and then we will have the objects. We will have the objects. So what we will do? We will have the structure. और जैसे कोई कस्टमर आता है, let's say there is one customer coming up, he will fill the form. That form is nothing but detail capturing. This form is nothing but a details. And then once that is done, then what we will do, we will have a object, we'll have a object is records. So what all things will be there? Two things here, data and the operations. So every object will have data and operations. Let's say this customer का ID होगा, let's say ID is equal to 2, account number is equal to, let's say, 1, and first name equal to, let's say, something, last name equal to something. This is the data. And what operations he can perform? Withdraw, deposit, transfer. So every object will have these things. Now once again new customer comes, there will be another object, and so on.
So every time you create an object, what happens? Memory space is allocated. Memory space is allocated. So you will create the class only once. You will use this structure, and using that structure, you are going to allocate the memory space. जितने बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उतनी बार मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा. So why do we need objects? This was the question. So what is an object? Object is an memory space allocated for the class type data. जो क्लास के स्ट्रक्चर में दिया था उसको मेमोरी स्पेस एलोकेट करना. दिस इज द क्लास टाइप डेटा. ये डेटा के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट करना. दैट इज नथिंग बट अ ऑब्जेक्ट. And every time you create an object, you are allocating the memory space. So from the given class, how many objects you can create? You can create any number of objects, right? So you are able to visualize what is class and what is object little bit. So class is kind of a structure which is instructions. Your object should be like this, or these are the operations your object will perform. These are the things we just note it down. This is just a definition. Class definition का मतलब होता है कि how your object is going to look like. Class create करना मतलब जो building का plan बनाते हो. So what you do, we just define how your building is going to look like. So whenever you say you are creating class, you are saying that how objects will be look like, how the objects will look like of this particular type. मतलब जब भी आप कोई प्लान बनाते हो, आप प्लान बनते हो मतलब इस प्लान का बिल्डिंग्स कैसे दिखेगा. When the actual building will be created, how the building will look like. Similarly, when you create the class, it is a picture. This kind of a picture how your object will look like. I will take one more analogy. Now let's say there are lot many cars in the market. अभी बहुत सारी cars market में दिखती है, रास्ते में दिखती है. So before you, let's say you want to create your own car. So what you will do? What is the first thing that you want to create your own car? You will create a design. या सीधा कार बनाने चालू करोगे आप? क्या करोगे आप? You will have two things. पहले तो क्या करोगे आप? Specifications और data. क्या लिखोगे आप? Data. And what all functionalities or a task? Functionality or task. तो डेटा मतलब कितने सारे व्हील्स रहेंगे, इंजन कितने रहेंगे, इंजन का कैपेसिटी क्या रहेगा, ये सारा डिटेल्स आप यहाँ पर स्पेसिफाई करोगे. इंटीरियर्स कैसे रहेगा, एक्सटीरियर कैसे रहेगा, कितना बूट स्पेस होगा, ऑटोमेटिक होगा, मैनुअल होगा, ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो, पहले स्पेसिफाई करते हो. यू विल स्पेसिफाई दैट, यू विल नोट इट डाउन दैट योर प्लान इज, मतलब वर्चुअली योर एवरीथिंग इज रेडी. बस आपको क्या करना है, अभी स्टार्ट करना है प्रोडक्शन. टू स्टार्ट द प्रोडक्शन. नाउ व्हाट फंक्शनलिटी इट विल हैव. फंक्शनलिटी मतलब म्यूजिक प्ले हो सकता है, इंजन स्टार्ट हो सकता है, स्टॉप हो सकता है, ऑटो इंजन ऑन, ऑटो इंजन ऑफ, बहुत सारी ऐसी फंक्शनलिटीज दे सकते हो. ये भी आपको पहले से डिफाइन करना पड़ेगा. यू विल डिफाइन दैट आल्सो. So this is something your structure is ready, and then using this structure you create cars. How many cars you can create? You can create any number of cars. You can create any number of cars, right? So this is the thing we have to remember. This is nothing but your class, and this is nothing but your objects. This is object 1, object 2, object 3, and so on. So what is an object? Now looking at this picture, you tell me what is an object. What is an object? Object is an instance of a class. Instance मतलब it is kind of a clone बोल सकते हो. It is created using this class. So this car is a creation of this particular plan. मतलब इस डिजाइन का यूज कर ये कार बनी है. वैसे ही ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास का मतलब होता है दिस इज क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास और अ स्ट्रक्चर. इट इज अ रिप्लिका ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग in a larger form, right? These are nothing but your objects. So every time you create an object, memory space will be allocated. Every time you create an object, memory space will be
allocate. ठीक. Now there are two things. Object मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि it is kind of a memory space allocation. What is object? Object is nothing but a memory space allocation. किसके लिए memory space लिखें? जो प्लान में बोला था उसके लिए. Object is a memory space allocated, but किसके लिए? Which is specified in this particular plan. Right? क्या तो clear है? Idea आ रहा है आपको? Now we'll just try to answer couple of questions. Let's try to answer these all of questions. What is an class? What is an class? Similarly, we will try to answer for object also. What is class and what is object? Class is a structure, blueprint, set of instructions, set of guidelines to create object. To create an object. What is an object? Object is an instance of a class, or object is an memory space allocated for the class type data. Is an memory space allocated for the class type data. Perfect. So why do we need class? We need class in order to create objects. Without class, can we create the objects? No. So we need class to create the object. And why do we need object? Why do we need object? सिंपल है. आप मुझे बताओ, अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप बैलेंस चेक कर सकते हो, पैसे ट्रांसफर कर सकते हो. कैन यू डू दैट? ऐसा नहीं कर सकते, राइट? वी कैन नॉट परफॉर्म दैट. So we need object in order to perform operations or task. We need object to perform certain task, or you can say we need object to represent real world entity in the program. Real world entity in the program. So without object you will not be able to perform operations. Simple. जो बोला था वही सही है. अगर आपका बैंक में अकाउंट ही नहीं है, how will you check the balance? किसका बैलेंस चेक करोगे? How are you going to transfer the money? You are not going to transfer. You will not be able to do that. कब कर पाओगे? जब आपका अकाउंट ओपन है, means your object is created. When your object is created, then only you will be able to perform the operations. Right? Facebook पे लॉगिन मतलब आपका अकाउंट नहीं है तो आप कुछ पोस्ट कर सकते हो क्या? Can you post something? No. So in order to post something, you need to create the object, or you need to sign up. That is nothing but object creation. It's you need to have your bank, your Facebook account. You need to have Facebook account. Then only you will be able to perform these operations, posting, commenting, everything. You will be able to do that only when your object is created. Object is created. So we need objects to perform certain task, and every object represents certain memory allocation. Right? Then how do we create a class and how do we create an object? That is a very simple thing we will do. Right? So ये सारे चार questions clear है. What is class? Why do we need class? What is object? Why do we need what is an object and why do we need object? So these two things we will cover right away. How to create a class and how to create an object. So in order to create object, what is necessary? In order to create object, what is necessary? Class. And in order to perform operations, what is necessary? Object. So there is a dependency. There is a dependency that in order to perform certain tasks, you need to have object, and if you want to have object, you need to have the class. Visualize हो पा रहा है आपको? Now whenever you are in a confusion, class and object, when you are not able to think of this example, bank account. Think of this as bank account. So every user has account number. Every user has a account number. Every user have balance.
एवरी यूजर हैव फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो क्लास के अंदर आपने स्ट्रक्चर दिया, तो एक एम्प्लॉय एक कस्टमर के लिए दिया है, वो सबके लिए दिया हो, लेकिन सबका अलग अलग होगा। so that is that particular things are something, so that first name last name balance, these are something information which is specific to that particular object. the operations are also specific to that particular object, मतलब डिपॉजिट कर रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो, किसके ऑब्जेक्ट से, मतलब किसके अकाउंट से, आपके अकाउंट से। so this is something individual or independent, individual information and operations we have. So object has specific set of variables, object has specific set of data, and object has some set of operations or functionalities or task, right? So whatever the information you see, that this is something individual. So two customers will have the bank account, दोनों का अकाउंट नंबर सेम होगा क्या? दोनों का बैलेंस सेम हो सकता है, बट अलग अलग है, दो अलग अलग जगह पर स्टोर्ड है वो। दोनों का फोन नंबर अलग होगा, दोनों का ईमेल आईडी अलग होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी अलग हो सकता है। देयर आर टू डिफरेंट डेटा सेट्स आर देयर, देयर आर टू डिफरेंट डेटा सेट्स आर देयर। so we have one customer 1 and customer 2, right? So this information which is specific to object, information and the task or operations which are specific to object are individual and are आप बोल सकते हो पर्सनल इंफॉर्मेशन, दैट इज समथिंग टू दैट इंफॉर्मेशन बिलोंग्स टू होम, दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसा जो मेथड्स है, इन्हें बोला जाता है ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक मेथड्स, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटा एंड सच वेरिएबल्स। अभी डेटा किसका यूज करके स्टोर करते हैं हम? हाउ डू वी स्टोर द डेटा इन जावा या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? यूजिंग वेरिएबल्स, यूजिंग वेरिएबल्स। So information which is specific to object will be stored using variables only. Which variables? Instance variables. What variable we call it as? Instance variables. So information which is specific to object will be stored using which variables? Instance variables. And operations which are specific to object और ऑपरेशन, जैसे आपका लॉगिन हो गया, लॉग आउट हो गया, विथड्रॉ हो गया, डिपॉजिट, दिस इज समथिंग स्पेसिफिक टू योर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, इन पर्टिकुलर मेथड्स को बोला जाता है इंस्टेंस इंस्टेंस मेथड्स। ये क्लियरिटी, आपको क्लियरिटी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, राइट? तो whenever you create an object, what happens? Memory is allocated, and once the memory is allocated, that particular object is ready to perform certain operations. That particular object is ready to perform certain operations, right? ऑपरेशन किसके ऊपर परफॉर्म होगा? उसके ऊपर इंडिविजुअल लॉग इन करते हो, मतलब आप किसके अकाउंट में लॉग इन करते हो? खुद के अकाउंट में करते हो। when your balance is getting updated, किसका बैलेंस हो रहा है? आपका खुद का। it is not something common, it is specific to you, this particular thing is specific to you only, right? So we will see this syntax wise, how to create a class, how to create an object also. Let's see this now. I will write this. First, I will see how to create a class, how to create a class. Now to create a class, we use a keyword called as class. What we use a keyword called as class. We use a keyword called as class. उसके बाद आप उसका कुछ नाम देते हो कि दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और प्लान इज फॉर व्हाट। अगर आपका बैंक अकाउंट क्रिएट करना है तो उसके लिए आप उसका नाम क्या दोगे? दिस स्ट्रक्चर इज फॉर टू क्रिएट द बैंक अकाउंट। अगर आपको कोई लेट्स से कोई एक्चुअल मतलब कोई बिल्डिंग होगा तो उसका कोई डिटेल चाहिए, लेट्स से आपको कस्टमर क्रिएट करना है, कस्टमर विल हैव कस्टमर डेटा एंड सम operations also, या प्रोडक्ट, कोर्स, स्टूडेंट, देयर आर n number of things, देयर आर n number of things you want to perform that. तो क्लास, उसके बाद आप क्या लिखोगे? व्हाट इज द थिंग? यू राइट द क्लास नेम। ये स्ट्रक्चर किस चीज के लिए? लेट्स से आई एम थिंकिंग कि ये दिस स्ट्रक्चर होगा आपका बैंक अकाउंट के लिए। किसके लिए होगा? बैंक अकाउंट। so this structure I will give the name as bank account, right? उसके बाद अब ये बैंक अकाउंट में क्या क्या होगा? so what things we will write is the class we are creating the class. So every bank account holder, he will have certain data. So what data he will have? He will have ID, he will have name, he will have balance,
and there might be some other hundreds of other fields, id, name and balance. id कौन से टाइप का है? id इंटीजर टाइप का हो सकता है. name it will be of string type. balance again I will take it as integer. ये हो गया आपका डेटा. so this is kind of data your bank account. this is your data. what is another thing? what operations customer can provide, or what operations a bank account holder can perform. what operations? withdraw हो सकता है, then deposit हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, there is a list of other operations. so these are nothing but आप बोल सकते हो टास्क और ऑपरेशंस और मेथड बोलते हैं हम क्या बोलेंगे इसे? मेथड. डेटा को बहुत सारे नाम से, अनगिनत नाम से, so we will call it as variables. so this is what your class is defined. so what we define, these are the only two things. there are a number of things other, but these are the two things we need as of now: data and method. we need two things, data and method. then using this, once this class is created, what is the next thing? once this class is created, how do we, what is the next thing we have? object create karna. this is class creation. this is class creation. now you want to create the object of this. you want to create object of this. तो object मतलब आपको create करना है. so what you are going to do? object creation is nothing but a memory space allocation. it is kind of memory space allocation. memory space किसे? ये जो दिया है इस information को आपको memory space allocate करना है. so how are you going to do that? so you will write one line, and the moment you write one line where you will create the object, the data or there will be memory space allocated for this particular things. क्या क्या होगा? memory space आपका id, let's say there will be something, name will be something, and you will have balance also. तो इन चीजों को कुछ तो वैल्यूज मेंशन होगी यहाँ पर, राइट? तो इनिशियली आई विल से आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग, मतलब डिफॉल्ट वैल्यूज. सो आई विल से 0, नेम इज नल, बैलेंस इज आल्सो 0. अभी ये मुझे ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट करना है. आई वांट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट लाइक दिस. इसके लिए आप लिखोगे, तो यू राइट, तो कौन से आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, राइट? यू वांट टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट यूज क्रिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड प्लान और द क्लास. आप क्या लिखोगे? यू विल से दैट क्रिएट अ ऑब्जेक्ट दैट इज ऑफ टाइप, कौन से टाइप का? whether it is bank account type, whether it is customer, कौन से टाइप का? you want to create a object which is of type, मतलब बोलते हैं बिल्डिंग क्रिएट करना, लेकिन कौन से प्लान टाइप का, मतलब कौन सा वाला बिल्डिंग आपको क्रिएट करना है. तो यू हैव टू स्पेसिफाई दैट. तो यहाँ पर लिखोगे आप बैंक अकाउंट. व्हाट इज दिस? दिस द क्लास नेम बैंक अकाउंट. और यहाँ पर लिखोगे आप कुछ वेरिएबल, मतलब जस्ट आई विल राइट द रेफ इक्वल टू न्यू मतलब create a new object, create a new object, and after that you write new bank account, and I write like this. अब इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन. इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन. अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? तो यू विल फाइंड दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज, what is this? This particular thing is, this is nothing but a object. and object मतलब कुछ तो डेटा रहेगा आपको. so this is how your object will be created internally, and this reference is pointing to an object. this kind of a reference मतलब link of where your object is created, memory space में कहाँ पर. now this object, new bank account, this object is of type बैंक अकाउंट. इसे आप ऐसे भी पढ़ सकते हो अगर आपको वेरिएबल समझ में आता है तो. int equal to 100. कैन एनीवन रीड दिस? int equal to 100 इसका मतलब होता है, नाउ दिस 100 is of type integer.
and where this 100 is stored, what is the label for that? So you can think of, so A is a name given to this particular container. A is a name given to this particular container, right? तो सिमिलरली ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट में बहुत सारी वैल्यूज रहेंगी, दैट वैल्यूज विल बी स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. We'll explain this thing again. This is how we create the class and this is how we create the object. Syntax wise आपको लिखना है तो I will just write it down. क्लास क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, क्लास कीवर्ड रहेगा और यहाँ पर क्लास नेम फॉलोड बाय कर्ली ब्रेसेस एंड देन यहाँ पर दो चीजें रहेगी, आपका डेटा एंड मेथड्स और क्लास. This is how you create the class. Then how do we create the object from this? So whatever the class name we have, we write this class name, which variable name, then you write new keyword, then again you write the class name, you write this brackets. So this is the syntax to create an object. यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट. राइट हैंड साइड जो भी दिख रहा है आपको, RHS इज ऑब्जेक्ट. और ये क्या है कि ये जो डेटा है ये कौन से टाइप का है, क्लास टाइप बोल सकते हैं, एंड दिस इज अ वेरिएबल. we'll talk about this reference variable क्या होता है. For now just understand it is an variable. This is how we create the object. Clear? Syntax याद रहेगा. Now it will take some time to digest. We don't have any hurry. आराम से हम उसको digest करेंगे. But you should be able to visualize what are the things. क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उनका क्या यूज होता है, उससे कैसे क्रिएट करा जाता है. दिस इज हाउ वी क्रिएट. Now let's write this syntax also. I will write class name we write, then we have some set of data, some set of methods, and after that once the class is created we write class name. The variable name is called as, we will say reference variable equal to new class name. This is how we create the object. इसमें से ऑब्जेक्ट कौन सा है, so what is object, object is new class name, this right hand side is a object, then it is an reference variable, it is an reference variable, and class name is a type of object. Then in the object creation itself you will see new is a, it is a keyword to create object. Then fifth class name, ये जो लिखा है इसे बोला जाता है इट इज एन कंस्ट्रक्टर कॉल. कंस्ट्रक्टर कॉल क्या होता है, you can think of constructor as a मिस्त्री. मिस्त्री पता है राइट आपको, क्या काम होता है उसका, जो वर्कर होता है जो एक्चुअल काम करता है. तो व्हाट इज द जॉब ऑफ दैट, टू क्रिएट बिल्डिंग. Similarly constructor is something which is creating the object. So constructor मतलब construct something. So constructor is kind of, you can think of which is creating or constructing or developing the object. तो object creation के लिए आपने यहाँ पर दो चीज लिखा. आपने बोला new, new का मतलब create new object. तो उसके लिए आपने क्या लिखा है यहाँ पर, class name. इसका मतलब होता है constructor call. This is a constructor call to create a new object using the constructor.
is a constructor call. This is a constructor call. And this particular thing, this entire object, this is of type class name. मतलब ये कौन सा टाइप का डेटा है? This particular thing is of type class name. Now this is kind of a reference variable. This is kind of a ref stands for reference variable. इसे reference variable क्यों बोला जाता है? We will talk about that. Variables. A variable which contains a value of type primitive data type, that is called as primitive data type. Primitive. What are the primitive data types we have? There are 8: byte, short, int, long, float, double, char, boolean. 8 है. इनको छोड़ के मतलब अगर डेटा आपका इन टाइप का है तो उसे बोला जाता है प्रिमिटिव वेरिएबल. अगर वेरिएबल स्टोर करता है इनमें से कोई वैल्यू तो उस वेरिएबल को बोला जाता है प्रिमिटिव वेरिएबल. अगर वेरिएबल इन 8 को छोड़ के दूसरा कोई भी वैल्यू स्टोर करता है तो उसे बोला जाता है रेफरेंस वेरिएबल. क्या बोला जाता है? रेफरेंस वेरिएबल. व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेफरेंस वेरिएबल? बिकॉज इट कंटेन्स रेफरेंस और इनडायरेक्ट एड्रेस ऑफ समवन एल्स. क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आपका वेरिएबल आपका 2 टाइप का है. पहला प्रिमिटिव. कौन सा है पहला टाइप? प्रिमिटिव. अगर आपका वेरिएबल इन टाइप का है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, char एंड बूलियन, तो उसे बोलो जाओगे प्रिमिटिव. अगर इनको छोड़ के जो भी रहेगा उस वेरिएबल को बोलेंगे हम रेफरेंस वेरिएबल. क्या बोलेंगे हम उसे? रेफरेंस वेरिएबल. अभी इस रेफरेंस वेरिएबल क्यों बोला जाता है? वेरिएबल का अल्टीमेट जॉब क्या होता है? व्हाट इज द जॉब ऑफ वेरिएबल? इट इज काइंड ऑफ अ लेबल. इट इज जस्ट अ लेबल. Is a label attached to this particular container. Now either it can have primitive type, either it can have primitive value, और दूसरा लेबल क्या हो सकता है? रेफरेंस वैल्यू. रेफरेंस वैल्यू मतलब किसी और का एड्रेस, किसी और का एड्रेस, किसी और का कोई और मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस दिया जाता है. एग्जाम्पल, अगर आपने कोई कस्टमर क्लास बनाया होगा, C इक्वल टू न्यू कस्टमर, तो कस्टमर कैसे दिखेगा उसके लिए आपने क्लास लिखी. नाउ यहां पर जो है इसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट. नाउ C इज अ वेरिएबल. C इज काइंड ऑफ अ लेबल. क्या है ये? C लेबल. यहाँ पर उसका मेमोरी एड्रेस होगा, तो इट विल कंटेन सम वैल्यू. इट विल कंटेन सम वैल्यू. नाउ दिस वैल्यू इज नथिंग बट अ एड्रेस ऑफ समवन. यहाँ पर कुछ डेटा रहेगा. यूजुअली क्या रहेगा? किसका एड्रेस रहेगा? ऑब्जेक्ट. दिस विल बी ऑब्जेक्ट. So this value is nothing but this value can be I will just write that this is the value. What is value? Value is a reference of another object. Reference of an object. मतलब इसमें डायरेक्ट वैल्यू है क्या? प्रिमिटिव नहीं है. ये क्या है? किसी और का एड्रेस बोल सकते. इट इज काइंड ऑफ अ डायरेक्ट एड्रेस बोल सकते. आपने डिक्शनरी देखा होगा. डिक्शनरी में क्या होता है? लेट्स से मुझे किसी का एड्रेस देखना है, तो दिस विल हैव द ओनली एड्रेस. लेट्स से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मुझे एड्रेस देखना है. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके आगे एड्रेस लिखा होगा. वेदर दैट इज एक्चुअल प्लेस, वेदर इज इट अ एक्चुअल प्लेस? नो. So we go to that reference and from that reference point to that actual address, right? So using that address, using that reference, we go to the actual place, right? अब लेट्स से आपको आईटी शाला आना है तो आप क्या करते हो? पहले एड्रेस देखते हो. So you get a reference. So using that reference, you come to this. Using that reference, you come to that. So what is that reference? So reference is nothing but a address, actual address. Whether it is actual value? No. It is a address of someone else. Address of some other object. That's why it is called as reference variable. Based on what variable contains. वेरिएबल के पास 2 ऑप्शन है. क्या ऑप्शन है? एक तो प्रिमिटिव टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा, नहीं तो दूसरा कौन सा है? नॉन प्रिमिटिव. मतलब इनको छोड़ के दूसरा कोई
वैल्यू रहेगा तो उसे बोलोगे आप रेफरेंस वेरिएबल। सिंपल है। अभी लेट्स से दिस इज वाटर बॉटल, इसके अंदर दूसरा कुछ कंटेंट रहेगा तो वी विल कॉल इट एज, लेट्स से इसमें मिल्क है तो वी विल कॉल इट एज मिल्क बॉटल। वैसे ही वेरिएबल कंटेंट्स प्रिमिटिव, तो कौन सा वेरिएबल रहेगा? प्रिमिटिव वेरिएबल। अगर वेरिएबल के अंदर आपका रेफरेंस वैल्यू है तो उसे बोलोगे आप रेफरेंस वेरिएबल। मतलब बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ वेरिएबल वी हैव टू टाइप्स। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स वी हैव? प्रिमिटिव टाइप एंड दूसरा नॉन प्रिमिटिव। आपको दो वेरिएबल पता होना चाहिए, कौन सा, उसके अंदर क्या कंटेंट है। अभी आपके घर में पाइपलाइन होगा, लेट्स से गैस पाइपलाइन एंड वी हैव वाटर पाइपलाइन, तो उससे पाइप, दोनों भी पाइप ही है लेकिन उसके अंदर कंटेंट अलग अलग है, इसलिए उसको बोला जाता है दिस इज वाटर पाइप एंड दिस इज गैस पाइप। Similarly, if a variable contains primitive type value, that will be called as primitive variable. If a variable contains reference value और किसी का एड्रेस या रेफरेंस, तो उसे बोलोगे आप रेफरेंस वेरिएबल। सिंपल। Let's write this. Do you need this drawing or I can just write this? ये सारा सब कुछ चाहिए आपको ड्राइंग्स? ठीक है। Let me quickly write that. What is class? Is class set of instructions to create an object. Set of instructions to create an object. And what is an object? It is an instance of an instance, मतलब allocated memory space. Instance is an instance of a class. Instance का मतलब क्या होता है? It is a memory space allocated. So it is an memory space allocated for the class type data. It is an memory space allocated for the class type data. So we need class first to create object. We need class first to create object. Using a class, we can create any number of objects. And remember, object creation represents memory space allocation. So every object has two things. So why do we need the object? We need object to perform certain task. We need object to perform certain task, right? Without object bank account ही नहीं होगा, they will not be able to do anything. That's why we need. So every object will have state and behavior. मतलब state का मतलब होता है डेटा, इंफॉर्मेशन, फील्ड्स, एट्रीब्यूट्स और भी बहुत सारे नाम, वेरिएबल्स एंड will have state and बिहेवियर को आप बहुत सारे नाम से, मेथड बोल सकते हो, रूटीन बोल सकते हो, देन इम्प्लीमेंटेशन, बहुत सारे नाम से, ठीक। So what is the syntax? How do we create a syntax? To create a class, you know that we use a class keyword, use class and the class name
and there we write two things minimum, state and behavior. State मतलब आपका data and behavior मतलब आपका methods. Once we have the class, we create the object. So how do we create the object? Class name ref equal to new class name. So we create the. Now in this case, what is this particular thing is nothing but a object. Remember, this is the object. Left hand side wala nahi. This is the object. So what is the object? New class name. The object. Reference is an it is a reference variable which contains address or reference of an object. जो भी ऑब्जेक्ट बनता है उसका क्या होता है? एड्रेस या रेफरेंस बोल सकते हैं. एंड क्लास नेम इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ, क्या स्पेसिफाई करता है कौन सा टाइप का ऑब्जेक्ट है. एंड व्हाट इज न्यू कीवर्ड? इज ए कीवर्ड which is used to create the new object. And what is this class name? It is a call to the constructor which is creating the object. याद रहेगा. नाउ बिफोर वी एक्चुअली, अभी ये तो हो गया सारा. अभी इसके अंदर जो भी डेटा रहेगा, अभी आपको क्या करना है? अभी तो ऑब्जेक्ट बन गया. नाउ वंस योर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, वंस योर डेटा इज स्टोर्ड, ऑब्जेक्ट क्रिएशन मतलब डेटा कुछ स्टोर करना. अभी आपके पास डेटा स्टोरेज के लिए मल्टीपल ऑप्शंस है. मतलब आपको जैसे कस्टमर अकाउंट ओपन करने के लिए आता है, उसको सब कुछ, एक तो सब कुछ पता होगा या कुछ कुछ पता होगा या कुछ डिटेल्स पता नहीं होगा. ऐसा भी हो सकता है. कभी कभी तो कुछ भी पता नहीं होगा. So in that case, we have different ways to create the object. A object which will have some default values, 0, null, 0, null. दूसरा, you will know all the values for all the fields. तीसरा, you will know some values and you will not know some values. एक तो कुछ पता नहीं हुआ, एक तो सब कुछ पता होगा. You will know something. तो उसके बेसिस पे you create different types of objects. You create different types of, right? तो different types of object create करने के लिए आपके पास क्या यूज करना पड़ता है? कंस्ट्रक्टर. सो कंस्ट्रक्टर इज काइंड ऑफ, यू कैन थिंक ऑफ इट इज अ टूल यूजिंग विच वी कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. क्या बोल सकते हैं? अगर आपको कैसा ऑब्जेक्ट क्रिएट चाहिए, कैसा ऑब्जेक्ट विद फुली लोडेड इंफॉर्मेशन, विद नथिंग लोडेड और पार्शियली लोडेड इंफॉर्मेशन, then you can use the constructor concept. We are going to learn constructors also later on. So this is something just I want to tell you overall picture. Then आपका डेटा जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका डेटा स्टोर करने के लिए कुछ वेरिएबल्स रहेंगे. so that variables we will say these are nothing but instance variables. These are nothing but instance variables. तो इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी कैसे अभी नेक्स्ट टॉपिक हम वेरिएबल्स पढ़ने वाले. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर देयर. तो ऑब्जेक्ट के जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर करने के लिए आप कौन से टाइप ऑफ वेरिएबल्स यूज करने वाले हो? इंस्टेंस वेरिएबल्स. एंड वेयर ऑब्जेक्ट्स विल बी स्टोर्ड, विच मेमोरी एरिया? नो, objects will be stored inside the, and where class structure will be stored? Class structure will be stored inside the class or method memory area. जो प्लान लिखा है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, right? Now once we have the object is in place, so what we are going to do?
ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मतलब अभी तो हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसमें क्या है, बस डेटा ही। अभी तो हमने जो अभी एक क्लास बनाई थी एक, उसके अंदर हमने क्या किया, बस अभी ऑब्जेक्ट क्रिएशन की प्रोसेस हमें और डिटेल में देखना है कि और डेटा कैसे देंगे उसको, और मेथड्स कैसे देंगे। सो वी विल टॉक अबाउट हाउ डू वी क्रिएट वेरिएबल्स, हाउ डू वी क्रिएट मेथड्स। तो मेथड्स मतलब आपका ऑब्जेक्ट क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है, तो मेथड क्या होता है, हाउ डू वी क्रिएट मेथड, दैट वी विल आल्सो गोइंग टू लर्न। देयर आर 5 थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न एज पार्ट ऑफ क्लास कंपोनेंट्स। क्लास कंपोनेंट्स मतलब क्लास के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं। तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा यानी वेरिएबल्स, दूसरा मेथड्स, देन कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर का क्या सीन है, व्हाई डू वी नीड कंस्ट्रक्टर, व्हाई डू वी नीड वेरिएबल्स, व्हाई ऑब्जेक्ट नीड एन वेरिएबल। सिंपल, ऑब्जेक्ट को डेटा स्टोर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो कैसे स्टोर करेगा, सो टू स्टोर द डेटा। एंड व्हाई मेथड्स आर रिक्वायर्ड, if there are no methods then object will not perform any operation. To represent what operations can be performed by the object, for that purpose we need to write the methods or operations. So we will see how to define data, how to define methods. Then once we have defined the methods, मतलब methods सारे objects के लिए ready रहेंगे, सारे objects can perform withdraw, deposit और transfer। then actual कोई भी object कैसे, कोई कभी सारे objects के लिए आपने define किया, लेकिन particular object एक्चुअल में कैसे पैसे ट्रांसफर करेगा, कैसे विड्रॉ करेगा, कैसे डिपॉजिट करेगा, so that we will also, so that is first of all definition. What is definition, what can be done, how can be done, so the everything is listed down. And once you start, once object is created, what is the what is the pending part, just perform the action, perform the operation. So how to perform operation, that is already defined when you create the class. When you create the class, how to perform operation, that is defined itself. Then once object is created, what is left, just call the methods or perform the operations. Calling the methods is nothing but performing the operations. So what is left, now we know how to create object, but only object creation is not sufficient. What is important is once our object is created, we will update your data also, we will maybe delete some data also, or maybe we will perform certain operations. तो ऑपरेशंस हम डिफाइन करेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर दिया हमने, एम्प्टी क्लास था, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को कुछ है ही नहीं, डेटा नहीं है, मेथड भी नहीं है। हम अभी नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, हाउ टू डिफाइन डेटा एंड मेथड्स। कैसे पढ़ेंगे, एक ऑब्जेक्ट को डेटा क्या क्या रहेगा, मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या डेटा रहेगा, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या क्या मेथड्स रहेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, डेटा कैसे करेंगे। वंस डेटा एंड मेथड्स आर डिफाइंड, एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स को कैसे डेटा प्रोवाइड करेंगे, एक्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और फिर ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करना है, दैट आल्सो वी विल कस्टमाइज यूजिंग कंस्ट्रक्टर आल्सो। These are the three important things: how to create different types of objects using constructor, how to define the data for all of the objects, and how to add or assign data, or how to access the data for a particular object, how to perform operation for a particular object, how to define all the operations for all the objects, that we will also। अभी कल हमारा बस टारगेट एक रहेगा, वेरिएबल्स। क्या रहेगा हमारा, वेरिएबल्स, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए डेटा कैसे डिफाइन करेंगे। डेटा डिफाइन मतलब कोई ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए ये डेटा रहेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का सबका डेटा अलग अलग रहेगा, लेकिन फील्ड सबके लिए सेम रहेंगे। एवरीवन विल हैव अकाउंट नंबर, एवरीवन विल हैव फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ये कॉलम डेफिनेशन हम देखेंगे, फिर उस कॉलम डेफिनेशन के बाद हम क्या देखेंगे, उसको डेटा कैसे सेट करते हैं। डेटा सेट करने के बाद क्या चेक करेंगे, व्हाट इज द बैलेंस, वी विल रीड द डेटा आल्सो, so we'll check how the data is stored, that also we will check। ठीक है, ओके।